Hello student, how are you? Today we will start the first chapter of biology. It is life process. This is chapter 6. So, life process. First again we will explain term life process. Life processes. If we think about this term, it means there should be some biological process, some biological vital process which are essential essential to existence of living organisms. Existence of living organisms. Organisms is called life process. Now, these are the common definition, but before start this chapter, we just explain what is the basic difference between living organisms and non-living organisms, and how do we tell the difference between what is alive and what is not alive. If we see the dog is running, if we see the cow chewing curd and man shouting loudly on the street. So, why? Because these all are living beings. If dog, cow and man were asleep, then what will we still think? That they are alive? But how do we know that? हम कैसे जानेंगे कि वो alive है? Then we see them breathing. हम उनकी breathing check करेंगे. We see them breathing and we know that they are alive. Now, what about plants? Some plants are green, that we say these green plants and these are alive. But what about plants that have leaf of color of their green? लीफ, यदि किसी प्लांट्स का लीफ ग्रीन लीव्स जो है ग्रीन कलर की है, तो हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है, क्योंकि उसमें कुछ बायोलॉजिकल और कुछ उसमें लाइफ प्रोसेस हो रही हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट ग्रो ओवर टाइम? और प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं, वी कैन से इट इज अलाइव. ठीक है, बट इन अदर वर्ड we tend to think of some sorts of movement. कुछ living organisms they show movement, either growth होती है उसमें, related or not related, but sometimes these growth are related to internal mechanism, sometimes it is outer from outside from their surroundings or their outside atmosphere. Okay student, as कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. तो कुछ ऐसे कॉमन एविडेंस हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करेंगे. ठीक है, बट द प्लांट्स दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. बट हम कहेंगे यदि प्लांट्स यदि ग्रोइंगनेस यदि वो है अलाइवनेस, यदि कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो अलाइव है. बट यदि कुछ प्लांट्स जो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं स्टिल दे आर अलाइव. सो कुछ एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथिंग तो कर रहे हैं बट उनमें विजिबल मूवमेंट नहीं है. तो व्हाट इज बेसिक क्राइटेरिया? वी कैन डिफाइन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव. सो देयर आर सम लाइफ प्रोसेस which maintained in living organisms. So life processes are which are important and help to existence of living organisms. Now our next point is what are life processes.
what are life process? Life processes क्या है? So, to understand life processes, we are just take up one examples. Just take examples. जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो यदि उसे सर्वाइव करना है तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट है. किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? फूड की. और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और ये एनर्जी उन्हें किससे मिलती है? फूड से. तो फूड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर ले रहे हैं. वी आर टेकिंग फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट बिकम इन सिंपलर फॉर्म. तो ये किसी एक सिस्टम के थ्रू होता है. वो सिस्टम है न्यूट्रिशन. सो वन लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. नाउ न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि जो हमने फूड लिया वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ. सो व्हेन वी टेक ऑक्सीजन it is called as respiration. The second life process is respiration. After respiration, the animals or organisms will growth. क्या करेगा? वो अपनी growth start करेगा. तो growth is also life type of life process. After that, growth के बाद क्या होगा कि यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूज साइज का है तो वो सेल टू सेल सब एनर्जी जो है ट्रांसफर होना है. तो ये किसी एक सिस्टम के थ्रू होगा. वो इज दैट विल बी ट्रांसपोर्टेशंस. जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन some waste product will be form. तो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसको भी बॉडी के बाहर निकलना है क्योंकि वो टॉक्सिस है. आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन some waste product will be released. Waste product will be released or form that will be toxic for body, so it should be excreted. So next system will be excretions. After that excretions, the organisms show sensitivity. So then next is sensitivity. And after that sensitivity, organisms reproduce themselves and maintain their continuity in future. So that is reproduction. Last is reproduction. So here we will include 8 main process in life process. First one is nutrition, respiration, growth, transportations, excretions, sensitivity, reproduction, and last one is movement. Last one is movement. It is also required for living organisms. It is also included in life process because movement MENT, because movement बहुत जरूरी है. मूवमेंट नहीं होगा तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वाइटलनेस शो नहीं करेंगे. इसलिए बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है. तो दीज आर द 8 systems which are included in life process: nutrition, respiration, growth, transportations, excretions, sensitivity, reproduction, and movements. So these are the life process. Now here we will discuss our body. Since the maintenance process, these all life process which maintained repairing and creations of our injured cells which is already present in our body. हमारी बॉडी में कुछ सेल्स कंटिन्यूसली इंजर्ड हो रहे हैं, कुछ क्रिएट हो रहे हैं, कुछ किल हो रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इन सब के लिए इन सिस्टम्स की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल्स
यदि हम एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होनी है, बॉडी के अंदर के बहुत सारे वर्क होना है, तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी जो है हम किससे लेते हैं? ये एनर्जी हम लेते हैं आउटर एटमॉस्फेयर से। कहाँ से लेते हैं? आउटर, जो एनर्जी के लिए जो रॉ मटेरियल वो हम किससे लेते हैं? आउटर एटमॉस्फेयर। किसके फॉर्म पर? प्लांट्स ले रहे हैं, वी आर हेटेरोट्रॉप्स, तो प्लांट्स किसके फॉर्म पे ले रहे हैं? ये ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पर एंड वाटर के फॉर्म पर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एनवायरमेंट से। एंड वाटर कहाँ से ले रहे हैं? रूट से। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने वाटर लिया तो फिर दोनों के कॉम्बिनेशन, दीज टू आर रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these are inorganic substance. Inorganic substance, or these inorganic substance convert in complex material and form a glucose C6H12O6. So these are common process. It is present in plants and it is life process. This process going on in presence of light and chlorophyll, and this way photosynthesis process going on. So ultimately we can say the organisms get raw material for energy from their outside atmosphere. So outside sources of energy could be quite varied. वो अलग अलग हैं, आउटसाइड के जो रिसोर्सेज हैं वो ऑर्गेनिजम्स वाइज अलग अलग होते हैं, और ये फॉर्म करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉप्स नेचर के होते हैं, तो वो उनके आउटसाइडिंग सोर्स अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के हैं? होलोजोइक नेचर के हैं, तो उनके आउटसाइड सोर्सेज दूसरे हैं, डिफरेंट हैं। तो आउटसाइड सोर्सेज भी वैरी करते हैं और डिफरेंट होते हैं, ये भी उसी तरीके से, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर, उसका हैबिटेट, ये हैबिटेट उनका डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, उनके इंटरनल मैकेनिज्म डिफरेंट है। दैट्स द रीजन दे विल अगेन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन अक्सर उसमें आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होते हैं और इतने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स अब वेरियस टाइप के हैं, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी वेरियस टाइप का होगा। अब नाउ हियर we will take one examples. It is amoeba. Amoeba is single cell organisms and it has no specific organisms for taking food, exchange of gases and removal of wastage. अमीबा में किसी भी तरीके के कोई भी सेल स्पेसिफिकेशन नहीं होता, ओनली एक तरीके की सेल होती है, वो उसके सब लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, जितना उसके बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है वो भी उसके सिंगल सेल से ही वो एक्सक्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक सेल के अंदर सब प्रोसेस है, तो उसको बहुत छोटे से मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, एंड उसमें अमीबा में एक डिफ्यूजन इस तरीके का प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपने रॉ मटेरियल जो अमीबा को रिक्वायर्ड है वो अपने सराउंडिंग से लेता जा रहा है। लेकिन यदि यही स्थिति मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो तो डिफ्यूजन कभी सफिशिएंट नहीं रहेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होगा और उसमें डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं रहेगा। डिफ्यूजन will be insufficient because it insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organisms. Means यदि डिफ्यूजन की प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अब इस कमी को यदि दूर करना है तो ऑर्गेनिजम्स को कुछ अपने में डेवलप करना होगा। दिस इज
कॉल्ड एज, क्या डेवलप करेगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को लेगा और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस उसकी ईच एंड एवरी सेल पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसफर करेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. सो in this topic we have read a life process and what is the need of life process in existence of living organisms, and after that we have discussed here simpler organisms and complex organisms here. So there are some questions which you have to complete in your notebook. The question is, first one, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms